we will be discussing This voltage call is now regulator. being Okay, recorded. voltage regulation basically, and voltage regulation is being achieved by voltage regulators. Voltage regulators. So we have a voltage regulator. Voltage regulator. Now, if we explain voltage regulator, it is an electronic circuit. A voltage regulator is nothing but it is an electronic circuit which maintains the DC output of a power supply, okay, constant irrespective of the fluctuation, which maintains constant constant DC output of a supply irrespective of fluctuations, irrespective of fluctuations in AC supply, in AC supply. I'll explain what does that mean. And variations in load current and variations in load current. Now see, we might be having a DC supply. A DC supply, we know, dual power supply or a single power supply, it is always operated upon an AC voltage. Okay, DC power supply, and the input of the DC power supply is always AC voltage. It is 220 volt AC. Okay, now based on this 220 volt AC, we know that we use step down transformers that transform this high voltage into smaller voltage, smaller AC voltage. Then we use a rectifier, and finally we are having an output DC. Okay, this is DC output. This is DC output between these 2 points. Suppose now your AC is like this. Our AC is like this. Suppose our AC is like this, okay? And it has an amplitude of 220 volt, 220 volt. And based on this AC, we are obtaining a DC constant DC voltage of 12 volts. Okay, so we have 12 volts. Suppose there are variations in input AC. अब हमारी जो input AC है, it has been changed now. It is now changed to 110 volts. In winters, the voltage in our area or in our region, it gets dropped. It gets dropped drastically. Now suppose because too much load is there, okay, suppose the voltage is now dropped to 220, from 220 to 110 volts. What do we expect? Because output is proportional to input. Here, V output, it is proportional to V input, DC power supply. Then the output of this supply will also change to half. It will be because it's a step down transformer. The number of turns or the turn ratio is also fixed. Therefore, this supply voltage will also, output supply will also decrease down. So with variation in input, there will be always variations in output. So we use a special circuit or a special circuit elements which maintain these, variations in output. They make DC output constant irrespective of the variations in the input. Okay, so this is one case where the output can vary because of variation in the input, in the input. The second case could be we have a power supply like this. We have a power supply like this, and its input is constant. Its input is, for example, constant 220 volt. But suppose we have a load resistance. RL is 10K. So some current will flow, load current IL, kuch load current flow hogi, okay? And corresponding to this load current, there will be some voltage will be there.
But if load resistance will decrease, if load resistance will decrease, okay, so if load resistance will be decrease, if this will decrease, what will happen to the current? Current will increase. If load resistance will decrease, current will increase. Now see, this is V output here, V output here. If load resistance will decrease to short circuit, it will decrease to zero. What is the resistance of a short circuit? It is always zero. If load resistance will decrease in such a way that it is reduced to zero, then we know it will be a short circuit at the output. In short circuit, the current will be maximum. The current will be maximum. Okay. So in short circuit, the current will be very much maximum. But if we increase the load resistance to infinity, if load resistance is increased to infinity, what will be the current, load current? Then it will be nearly zero. It will be nearly zero, because when the resistance is infinite, so the circuit will be just like an open circuit. So open circuit में current zero होगी. So we can say then, if the resistance is very small, then the current is very high. Current is very high. And if resistance is very large, then the current is very low. Consequently, because of change in the current, क्योंकि अब देखिए, what is the voltage drop V output across this circuit? V output, it is equal to current into resistance. ठीक है, current into resistance. अब एक जगह करंट बहुत ज्यादा है, it is very high, and what will be then the output voltage? When current is very high and resistance is zero, very small, then the output will be zero. Then the output will be zero. So there will be no potential there. Output इसमें कुछ नहीं होगा. इसी तरीके से when current will be small, when current will be small, I is small, and RL is high, RL is high. In that case, there will be some higher voltage or some constant voltage. So we can see that when the load resistance also change, जब load supply में change होता है, current also changes. And because of the change in the current, the output voltage also changes. This is V output, for example. Output voltage also changes. Okay, output voltage also changes. Or this is I out, IL or VL, doesn't matter, दोनों एक ही बात है. तो so with that variation in load, so I can say that the output of a power supply, it changes because of two different reasons. One is variation in input, variation in input. And the second reason for the change in the output of a power supply would be variation in load. Variation in load. So as load changes, output of a power supply also changes. So DC power supply also changes. That is why I said that voltage regulator is an electronic circuit which maintains constant DC output of a supply irrespective of fluctuations in input AC supply and variations in load current. ठीक है, तो दो चीजें, एक तो लोड करंट में वेरिएशंस अगर होंगी उससे भी आपका आउटपुट चेंज होगा, and when there will be variation in input AC, then there will be fluctuations in the output of the DC. उस्मा बेटा आपको ये समझ में आ रहा है? उस्मा is not here. अरबा? जी समझ आ रहा है सर. Okay, what about रिहाब? रिहाब को समझ में आया? Yes, sir. Okay, तो power supply में there can be variations in output due to two different reasons. One is सर आप ये दूसरा केस फिर से बोलिए. दूसरा केस? Yes sir. Okay. I said that there can be variation due to load current also. Load current also. Okay. Now see, I have a resistor here. इसमें दो चीजें हो सकती हैं. When the current will flow here, for example, this is R of L, current will flow through the resistor, it will be I of L. So this is R of L, current through the resistor is I of L. If I am interested in finding the voltage across this resistor, then it will be VL. It will be VL. And VL will be equal to IL into RL. VL will be equal to IL into RL. Now see, if RL changes, अगर load resistance change हो रही है, VL will also change because VL is directly proportional to RL. ठीक है? So VL is directly proportional to RL.
If RL changes, अगर increase होगा RL, then VL will also increase. If RL will decrease, then VL will also decrease. So that is what I said कि power supply में अगर output पे load change करते हैं हम, if we change the load resistance, then the voltage of the power supply that also changes. Voltage, output voltage also changes. ठीक है, उसका output भी change होता है. ठीक है हमाद? Yes, sir. Is Sir, it आगे. fine? Yes, Okay. sir. So that is why I said as we change the load, and it is quite natural. See, if you will use for on a power supply, if you will use a small LED, it will glow brightly with full brightness. उसी पावर सप्लाई पे आप एक बहुत बड़ा मोटर लगाओ जो बहुत जिसका लोड बहुत ज्यादा है, which draws too much current. Obviously, voltage will drop. Voltage will drop. ठीक है? तो there will be different voltages at different loads. So a voltage regulator is basically tackling these problems. When you have in practical life में जब हमारे पास एक सप्लाई होगी, लोड तो हमारे पास कांस्टेंट नहीं है. अब देखिए ये बात ध्यान से सुने आप. हमारे सर्किट में, in our circuits, whatever electronic circuit we have, we generally mention a resistance at the output which is known as R of L. R of L is not basically a resistor that we keep there. ठीक है, ये असल में it is not an inbuilt resistance of any electronic circuit. R of L can be anything. In practical life, R of L can be LED, क्योंकि LED की भी अपनी inbuilt resistance होगी. It can be a motor. It can be a heater, heating coil. It can be a fan, and it can be refrigerator. It can be anything, whatever you can think about. You know, the appliances that you have. Even a charger can be your load resistance. Charger, whatever you have. Now see, all these appliances have different resistances. जितना एलईडी करंट ड्रॉ करता है उतना हीटर नहीं करता है ड्रॉ. हीटर काफी ज्यादा करता है. जितना चार्जर ड्रॉ करता है करंट उतना मोटर नहीं करता है. जितना मोटर नहीं करता है उतना फैन नहीं ड्रॉ करता है. फैन ज्यादा करता है, ठीक है, या कम करता है. So load resistance can be anything in practical life, and all the load resistance are different for different appliances. Load resistances of different appliances vary. तो जो ही हम अब एक ही हमारे पास एक पावर सप्लाई है. अब ऐसा तो नहीं है हम हर किसी चीज के लिए अलग अलग पावर सप्लाई लगाएंगे. तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि we have a single power supply, but which can be used for various loads. Now, once we change the load resistance, the output of this power supply is expected to change. It's expected to change. You are designing your power supply as a 12 volt power supply. लेकिन जो ही आपने load change किया, अब ये 12 नहीं दे रही है, ये 10 ही दे रही है. It is not good for us. Okay? It is not desirable thing. You are changing the load now. Instead of 12, it is giving you only 6 volts, which is not desirable. So such kind of phenomenon, the variation in the output is tackled by an electronic circuit which is known as voltage regulator. तो voltage regulator का काम क्या होता है? In a power supply, a voltage regulator always maintains constant output irrespective of changes in the load and irrespective of changes in input power supply. कभी इनपुट पावर सप्लाई भी चेंज हो रही है, कभी आपका लोड भी चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी पावर सप्लाई जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है उसका, इट इज नॉट गिविंग यू द एक्सपेक्टेड आउटपुट. ओके, नाउ सी, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ दीज वोल्टेज रेगुलेटर्स. टाइप्स ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर्स. सर अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वैसे भी हो जाएगा ना आउटपुट वोल्टेज चेंज? हाँ, टेम्परेचर से भी चेंज होगी. आई एम नॉट, टेम्परेचर इज बेसिकली टारगेटिंग दोज डिवाइसेस जो सेमीकंडक्टर बेस्ड होंगी. या हाँ, ये बात भी सही है, टेम्परेचर से भी वोल्टेज चेंज होती है, लेकिन वी कैन नॉट कंट्रोल दैट इज डिफिकल्ट फॉर अस. अब देखिए, टेम्परेचर से आपकी कंडक्शन या रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस किसी डिवाइस की चेंज होती है. जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस ही सही, resistance at one temperature it is having a one value, at another temperature it is having a different value. अब वो चीज हम टैकल नहीं करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर्स से. वो चीज वोल्टेज रेगुलेटर्स से टैकल नहीं होता है. उसके लिए अलग चीजें हैं, उसको हम कहते हैं कंपनसेशन मेथड्स. वो कंपनसेशन मेथड हम आगे पढ़ने वाले हैं जब when there will be variation due to temperature. It is not only temperature, basically there are many other factors also in electronics that changes the current and voltage.
वो चीज़ें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, कुछ और लेक्चर्स में आने वाले हैं वो. But yes, very correctly said, temperature also affects the voltage and the current. In fact, the internal गेन ऑफ ए डिवाइस, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, बीटा वगैरह, वो भी इसमें इफेक्ट करते हैं. तो हम उन दो का तज़किरा अभी नहीं करना चाहते हैं. फिलहाल हम सिर्फ ये चीज़ कर रहे हैं, वो इंटरनल फैक्टर्स हैं. टेम्परेचर इंटरनली इसको चेंज करता है. अब फिलहाल हम कर रहे हैं बात वेरिएशंस ड्यू टू इनपुट एंड वेरिएशंस ड्यू टू लोड. दैट इज इन आवर कंट्रोल. टेम्परेचर हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो तो उसका हम वी विल डेफिनेटली डिस्कस दैट ऑल्सो. उसके अलग लेक्चर्स आएंगे. टेम्परेचर एंड कुछ और 3 चीजें और आएंगी. So what I was saying that the types of voltage regulator. ठीक है. So basically voltage regulators, they are classified into 2 different categories. इनकी 2 broader categories हैं. One is known as linear regulators, linear voltage regulators. Another one is non-linear voltage regulators. Okay, non-linear voltage regulator. Non-linear voltage regulator, they are also known as switching regulators, जिसमें हमारे जिसमें हमारे स्विच मोड पावर सप्लाईज भी आती हैं. तो हम उन पे इस वक्त बात नहीं करेंगे. विल गो फॉर लीनियर ओनली. ओके. So linear regulators. Linear regulators, they are basically using, linear regulators are designed using these components. Regulators, linear power supply, regulators using discrete components. So linear voltage regulators, they are designed using discrete components, circuit components. Okay, and they can be further classified as shunt regulators and series regulators. Okay, and then we have another class based on linear voltage regulators. It is designed, linear voltage regulators can be designed using discrete circuit components, discrete electronic components such as resistor, diode, capacitor, maybe inductor also. But another class is IC regulator. That is also a linear voltage regulator, IC regulators. So it is integrated circuit regulators. Okay. Now, integrated circuit regulators, they can be fixed. There can be fixed IC regulators such as 78XX and 79XX. तो जो रेगुलेटर्स, लीनियर रेगुलेटर्स IC से बनती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट से बनते हैं, they are fixed. They can be fixed or they can be adjustable. Now fixed का मतलब है they can adjust your output power supply at a fixed level. Okay, and you cannot change them. For example, अगर वो IC integrated circuit ऐसे बनाई गई है कि आपका आउटपुट आना चाहिए 12 वोल्ट, 12 वोल्ट्स, then it will always maintain 12 volts. अगर वो ऐसे बनाई गई है कि आपका आउटपुट होना चाहिए 9 volts, तो it will always maintain only 9 volts. ठीक है. So you cannot change that. A user, it cannot change the voltage. It cannot determine what voltage it should fix in the power supply. वो जो चीज उसमें डिसाइड की जाती है वो फैब्रिकेशन लेवल पे डिसाइड की जाती है, जहां से आईसी बन जाती है. तो उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है. उसमें अब 2 तरीके के आईसीज बनती हैं. कुछ एग्जांपल है फिक्स्ड आईसी रेगुलेटर्स में. 78XX. 78XX एक सीरीज है आईसीज की, इंटीग्रेटेड सर्किट्स की. You have 7805. I'll write it like this. 7805. Now 78 would mean a positive voltage regulator. 78 would mean a positive voltage regulator. 78 means positive voltage regulator. 05 would mean what is the regulation voltage.
ये कितनी वोल्टेज रेगुलेट करेगा? तो 7805 जो आईसी है, इट विल मेंटेन +5 volts constant voltage, +5 volts. Similarly, you have 7806. 7806 would mean that it will maintain +0.6 volts constant output. ठीक है, अगर आपको कभी 6 volts output चाहिए constant, you will use 7806 IC. We have also another IC 7809, 7812, 7815. We have these ICs also. Rehab will tell me, Rehab, what will be the output voltage, regulated voltage of a 7809? Rehab, Yes, sir. what will be the regulated output voltage of 7809? Sir, output voltage. हाँ, 7809 IC कितने वोल्टेज आउटपुट रेगुलेट करेगी? So 09. क्यों 09 करेगी? तो क्योंकि आपने बोला ना 780 फिक्स वैल्यू होता है पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर, तो जो 0 मतलब जैसे आपने अभी एग्जांपल दी 05, अगर हम देखें जो लास्ट पे होते हैं वो रेगुलेट 7809 will always regulate a +9 volts constant voltage. Okay. Similarly, Binish, what will be the regulated output of a 7815? +15 Plus volts constant 15. voltage. ठीक है, +15. Now we have another series 79 series. इसमें और एक series है 79XX. 7905 का मतलब है 79 would maintain a negative, it is a negative voltage regulator. Negative voltage regulator. Okay, negative voltage regulator. 05 would mean regulated output. कितना आउटपुट ये रेगुलेट करेगा डीसी. ओके, सो 7905 वुड रेगुलेट -5 वोल्ट डीसी. ओके, 7905 -5 वोल्ट डीसी करता है रेगुलेट. Abrar will tell me what will be the output of 79056. Abrar, Hamad. Hello, sir. Yes, sir. Hello. Hello. चलिए सारे बच्चे जो बॉयज हैं, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा. सभी के लिए ऑन. अबरार तुम बंद करो. अबरार इज नॉट एट होम. Hello. नहीं sir, मैं हूँ. घर में हो? Okay. What is the जी, sir, regulated घर- output of 7906? Turn on your camera. Sir, -6 volt. एक मिनट sir. -6 volt sir. -6 volts. Very good. -6 volts. AC? जी sir. AC volt? जी sir. -6 volt AC? DC. DC. It will always maintain a DC voltage. Shadab will tell me 7909 में कितनी वोल्टेज होगी आउटपुट रेगुलेट? अपनी माइक खोलो पहले. शादाब, टर्न ऑन योर माइक. हाँ, -9 voltage DC. -9 वोल्टेज नहीं है, वोल्ट्स Volt. डीसी. Volt. हाँ, ठीक है. और अच्छा, हमाद बताएगा 7812 में कितनी रेगुलेशन होगी बेटा? Sir, 12 volt positive. ठीक है. पॉजिटिव. वेरी गुड. ओके. 7915 में कितनी होगी? रियान बताएगा. -15 volt. -15 AC वोल्टेज है ना? DC. Okay, DC, very good. Now see, please remember that all this discussion was pertaining to fixed voltage regulator. इसमें एक बार मैन्युफैक्चरर ने आईसी बनाई 7806 की, 6 वोल्ट्स के बाद ये कभी रेगुलेशन नहीं करेगी, मतलब 6 वोल्ट्स ही मैक्सिमम ये देगी आउटपुट. इट विल मेंटेन ए 6 वोल्ट्स कांस्टेंट टिल दिस आईसी इज एग्जिस्टिंग. ये हमेशा, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है. ठीक है, तो ये ऐसे ही रहेगी हमेशा. जो ही इसको जैसे बनाया गया, इसको वैसे ही रहना है. अब इसमें एक दूसरा क्लास है आईसी रेगुलेटर्स में. एक तो था फिक्स्ड क्लास, अनदर क्लास इज एडजस्टेबल क्लास. एडजस्टेबल.
दिस इज ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट वोल्टेज आईसी वोल्टेज रेगुलेटर, बट इसमें आप जो वोल्टेज है वो आप चेंज कर सकते हैं। इसमें नंबर नहीं, इसमें नंबर डिटरमाइन नहीं करता है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द आईसी। यू कनेक्ट एक्सटर्नली ए पोटेंशियल वेरिएबल रेजिस्टर, ए पोटेंशियोमीटर, जिसकी मदद से आप इसकी आउटपुट वोल्टेज जो है वो आप इसको कर सकते हो चेंज। ओके, सो वन आईसी फॉर दिस इज 723 IC integrated circuit 723. It is an example of adjustable regulator. Okay, adjustable regulator. अब इसमें भी दो रेगुलेटर्स हैं, सब क्लासेस हैं इसमें। लो वोल्टेज regulator, adjustable regulator, and high voltage adjustable regulator. तो इसमें दो क्लासेस हैं, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। लो वोल्टेज वो क्लास है जिसमें आप रेगुलेशन कर सकते हैं लेस देन 7 वोल्ट, लेस देन 7 वोल्ट। और हाई वोल्टेज वो है क्लास जिसमें आप ग्रेटर देन 7 वोल्ट आप कर सकते हैं रेगुलेशन। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट लीनियर regulators, and I said that they are of two types which can be realized using discrete components or integrated circuits. Okay, तो मैं आगे इनमें थोड़ा और बताऊंगा, but right now we will use we'll discuss regulation using discrete components, for example as Zener diode. Okay, Zener diode, और उसमें भी जैसे मैंने कहा it can be shunt regulators and it can be series regulators. So we will discuss one case of shunt regulation using discrete components, shunt regulation using discrete components. Okay, so I'll write down here shunt regulator using discrete components. Okay, all right. Now see, first of all उसमें कौन सा आएगा पहला क्लास? Zener diode. It's a very famous component, Zener diode. Zener diode as a shunt regulator. Zener diode as a shunt regulator. Okay, all right. Now see, Zener diode, this is the symbol of a normal diode. ये जो है ये symbol है normal diode की, ये है normal diode. This is the symbol of a Zener diode. This is a symbol of a Zener diode. Symbol of a Zener diode. Now normal diode, generally it is operated in forward bias. नॉर्मल डायोड जनरली ऑपरेट होता है फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में ये कंडक्ट नहीं करता है। एंड सरप्राइजिंगली Zener diode is always and always operated in reverse bias. In forward bias, Zener diode acts just like a normal diode. In forward bias, Zener diode acts as a normal diode, but it is always operated in reverse bias. In reverse bias, it acts as a constant voltage regulator. It acts as a constant voltage regulator. I'll tell you how it acts as a constant voltage regulator. If we draw VI characteristics of a Zener diode, so this is Zener current IZ, and this is Zener voltage VZ. Okay, Zener voltage VZ. और ये जो axis है, this is a positive axis of voltage, and this one is a negative axis of voltage. Okay, and you have a positive current axis here and you have a negative current axis here. Now IZ can be in milliamperes, it can be in milliamperes, but VZ is always in volts. VZ is always in volts. And as I said that Zener diode in forward bias, it acts as a regular diode. 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 Okay. Now see, it means that when I say that it in forward bias it acts as a regular diode, इसका मतलब है if you draw VI characteristics of this diode,
it will be similar to the normal diode. So you will be having somewhere a point जिसको कहते हैं V knee point, knee voltage point, which is roughly equal to 0.7 volts, beyond which the current will increase drastically, very sharply. It will increase exponentially. Okay, it will increase exponentially. But for a regular diode, if we draw complete VI characteristics in reverse bias, the diode does not conduct. It does not conduct. Okay, so the current is very small. Regular diode की current बहुत कम है, ये नहीं होती है ज़्यादा. But in Zener diode, a special phenomena it occurs in these diodes, which is known as Zener breakdown. Okay, Zener breakdown. In reverse bias, it acts like this. So at up to certain negative voltage point, which is known as Zener voltage, Zener breakdown voltage, which is denoted by Vz, क्योंकि ये वोल्टेज पे एक पॉइंट होगा, इसको कहते हैं Zener breakdown point. Zener breakdown point. Okay, so this is Zener breakdown point here, which is denoted by certain a point is on voltage axis will be voltage. ठीक है, तो हम इसको Vz से करते हैं denote. It is also known as Zener voltage. Zener voltage, Zener voltage. ये point है voltage axis पे, तो ये Zener voltage ही है. तो इस point के बाद the current inside the Zener diode, it increases, it shoots up to infinity. And as a result of that, a constant voltage is maintained. If you see here, if you observe this one, you will see that the voltage that is present between this point, it is Vz. Similar voltage is here also. There is not much variation. ये जो voltage है, ये almost constant है. ठीक है, ये सारी जगहों पे constant है. Even though the current increases, even though the current at this point it is IZ1, but at this point it is IZ2, at this point it is not the same. Current is increasing. So current may be increasing, but voltage is always constant. Because of this property, we say that a Zener diode acts as a voltage regulator. A Zener diode acts as a voltage regulator. So this is basically a reverse breakdown region. This entire region, it is also known as reverse, क्योंकि ये reverse bias में breakdown होता है, इसको कहते हैं reverse breakdown region. So a Zener diode acts as a voltage regulator in the reverse bias in reverse breakdown region. Okay, it acts as a voltage regulator. अब ये क्यों करता है? अब इसमें दो डायोड्स में दो फेनोमेना होते हैं, एवलांची ब्रेकडाउन एंड ज़ीनर ब्रेकडाउन. वो अलग बात है, मैं उसका एक वीडियो बना के जल्द आपको अपलोड कर दूंगा. बट यू शुड अंडरस्टैंड दैट एन ज़ीनर डायोड इन रिवर्स बायस इट मेंटेन्स कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज across it. What is that constant voltage? It is Vz, Zener voltage. Okay, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ constant voltage जो ये maintain करता है Zener diode, that is Vz, that is Zener voltage. Zener voltage. तो जो ही हम Zener diode लैब में लाते हैं, उसमें एक मार्क होता है Zener voltage Vz का, उस पे लिखा होता है how much is the Zener voltage of the diode. हर किसी Zener diode की अलग अलग हो सकती है. There can be Zener diodes with 1 volt regulation. There can be Zener diodes with 2 volt regulation. There can be Zener diode with 3 volt regulation. हो सकता है ऐसा. जैसे हमारे पास रेजिस्टेंसेस बहुत सारे वैल्यूज के हैं, 10K का है, 20K का है, 60K का रेजिस्टर होता है हमारे पास, 220K का भी होता है. तो इसी तरीके से Zener diodes can be of different value. They are available in the market with quite a wide range. We can have 5 volt Zener regulator with Zener voltage of 5 volts. We can have 10 volt Zener diode, वो भी हो सकता है. 3 volt Zener diode, 1.5 volt Zener diode होता है. ठीक है, so all is identified by its Zener voltage. When I say that the Zener diode has Zener voltage of 1 volt, it means it is regulating 1 volt output. It means it is regulating 1 volt output. Anyway, now see, so we'll write down now. We'll make first a circuit here. एक circuit बनाएंगे.
शंट रेगुलेटर का, ठीक है, Zener diode as a shunt regulator. So we have already written Zener diode as a shunt regulator. Okay. So I'll draw the circuit first. This is its supply voltage. This is supply voltage. And when I draw an arrow across the supply voltage, it means it is variable. It has variations. Okay. This is a resistor which is used in series with certain diodes. Ubair, what is this resistance known as? What is this resistance? This R of S. जी, इसको क्या कहा जाता है? इसका एक नाम है, इसका नाम क्या है? करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस। करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस, ये करंट को लिमिट करता है. It prevents excess flow of current into the diode. Okay, excessive flow of current into the diode. Now see, we have load resistance also, and load resistance, please note it down, it is also variable. So when load will, either there can be variation in supply voltage or load, उसकी वजह से आपकी output voltage हमेशा disturb होगी. So this is your plus and this is your minus, and the voltage across the load is known as V output. It is known as V output. And the voltage across this Zener diode, it is known as V of Z, which is Zener voltage. And the current across the current through the Zener diode, it is known as I of Z. I of Z is Zener current. And current coming out of Vs, it is known as I of S. I of S is source current. V of S is source voltage. Okay, so I'll write down here. V of S is unregulated supply. Ubair, बंद करो बेटा ये. Unregulated supply voltage. Okay, so which is basically fluctuating DC, which is causing fluctuating in output, fluctuating DC output. Okay, causing fluctuations in DC output. And what is R of S? R of S, I said that it is a series resistor. It is connected in series with Zener diode, series, but it is current limiting resistance. Current limiting resistor. Okay. And what is the job of R of S? What is the job of R of S? Why do we connect current limiting resistor? R of S prevents flow of large current through Zener diode. Okay. And the second thing we have to note down here that Zener diode. Now see, you have we have negative terminal of the battery. It is connected to P side of the diode, P side of the Zener diode. Okay, negative terminal of the battery is connected to P side of the Zener diode. This is P side of Zener diode. This is N side of Zener diode. So it is connected to P side of the Zener diode. If it is connected to P side of Zener diode, what is the biasing of Zener diode, Mohsin? Mohsin, what is the biasing of Zener diode, beta? फॉरवर्ड बायस में. Forward bias, very good. अच्छा, जुनैद भट्ट है यहाँ पे 46. Yes, sir. What is the biasing of Zener diode in this circuit? Forward bias. अच्छा, ठीक है. Asim? Yes, sir. What is the biasing of diode? Sir, reverse bias. Why is it reverse bias? सर क्योंकि आपने बोला ना इसकी जो ये है वोल्टेज हाई है. किसकी वोल्टेज हाई है?
सर ये पी और एन होता है ना, पी टाइप से शायद हाई वोल्टेज कनेक्टेड है ना। P किसकी बोल, कैन यू प्लीज रिपीट इट व्हाट यू आर सेइंग? सर पी और एन टाइप होता है ना हमें कनेक्शन, इसको जिसे हम चेक करते थे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। हाँ, यहाँ कैसे चेक करेंगे जरा आप बताओ मुझे। सर हमने किया है ना ये पॉजिटिव के साथ नेगेटिवली कनेक्टेड है पी साइड। हाँ, P side is connected to the negative terminal, so it is reverse biased. I said when P type is connected to positive terminal or higher potential, it is always forward biased. But here it is connected to negative terminal, so it is reverse biased. Okay, so you should remember that Zener diode in this circuit is operated in reverse bias or reverse breakdown region. So this is the reverse breakdown region जो ये ब्लू वाला है। तो जो जीनर डायोड एक तो ये रिवर्स बायस में कर रहा है ऑपरेट। रिवर्स बायस, इतनी वोल्टेज भी रिवर्स बायस है, देखिए इतनी वोल्टेज भी रिवर्स बायस है, इतनी वोल्टेज भी रिवर्स बायस है, लेकिन यहाँ पे रिवर्स ब्रेकडाउन नहीं होता है। रिवर्स ब्रेकडाउन इस पॉइंट पे होता है या इस पॉइंट पे होता है। सो यू शुड रिमेंबर दैट इट इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस and in reverse breakdown region, in reverse breakdown region, in reverse breakdown region. Okay, in reverse breakdown region. So it operates, Zener diode, it operates in breakdown region if voltage V across diode is Vz. Okay, please remember that. यहाँ देखो, ब्रेकडाउन रीजन Vz के बाद पहुंचता है, ब्रेकडाउन रीजन Vz के बाद आता है ना। अब देखिए, जब ये यहां से यहां आ जाएगा, ये ब्रेकडाउन रीजन नहीं है। ब्रेकडाउन रीजन यहां एक पॉइंट है, Vz है। ब्रेकडाउन रीजन यहां तक तो बिल्कुल नहीं है, अगर यहां तक पहुंच जाए तो नहीं है, क्योंकि करंट बहुत कम है, ठीक है, और वोल्टेज भी कांस्टेंट नहीं है, वोल्टेज तो हो रही है चेंज। अब देखिए पूरे इसमें यहाँ वोल्टेज जीरो है, एट दिस पॉइंट वोल्टेज इज जीरो। यहाँ फॉर एग्जांपल 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है फॉर एग्जांपल। अब वोल्टेज भी चेंज हो रही है, 0 से 1 2 3। सपोज Vz इज 4 वोल्ट, तो जब तक इसको रिवर्स बायस Vz के बराबर नहीं दिया जाएगा तब तक ये जीनर ब्रेकडाउन में नहीं पहुंचेगा। जीनर ब्रेकडाउन का मतलब है पूरा बेंड नीचे की तरफ करो आ गई और कांस्टेंट वोल्टेज रहा, ठीक है। अब इसके बाद ये होना चाहिए था ऐसे, मगर ऐसे नहीं जा रही है कर्व, ये बिल्कुल फ्लैट जा रही है, कांस्टेंट जा रही है अभी, ठीक है। तो जीनर ब्रेकडाउन जीनर वोल्टेज पे होता है। in a Zener diode, Zener breakdown always occurs at Vz. In a Zener diode, Zener breakdown always occurs at Zener voltage point. तो वही चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, that it operates in breakdown region if V is the voltage applied to the diode, reverse voltage applied to Zener diode. Across the diode is Vz. ये कम से कम Vz होनी चाहिए, क्योंकि Vz के बाद ही ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। And current is at least Iz minimum. What is Iz minimum from this point? देखो यहाँ, this is Vz, okay, this is Vz, and the current corresponding to this point, it is Iz minimum. Okay, so okay, it is Iz minimum, ठीक है। तो Iz minimum is the knee current basically. Iz minimum is the knee current. Okay. So Zener diode acts as a constant voltage source if breakdown region, that is current through the diode, can vary, but voltage across the diode remains constant. ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे voltage across the diode is constant in blue region, it is equal to Vz. It is constant all across the region. But current also varies. Current is Iz1, Iz2, Iz3. That is why I said Zener diode acts as a voltage
source if breakdown region, that is current through diode, can vary but voltage across the Zener diode remains constant. Okay, now see, in our circuit in our circuit, Zener diode and R of L are parallel to each other. Okay, hence the circuit is called as a shunt circuit. And since the voltage across the Zener diode is regulated now, if it is operated in reverse bias, it acts as a constant voltage. ठीक है, अब इसमें तो regulated voltage है, क्योंकि देखो आप Zener diode reverse bias में constant voltage देता है. It maintains a constant voltage. I'll write down here. Maintains constant voltage in reverse bias. Okay, in reverse bias. So across it means across Zener diode. Now see, we say that a constant voltage is maintained across the Zener diode. So that means whatever voltage is here between these 2 points across the Zener diode, it is a constant voltage. क्यों है कांस्टेंट वोल्टेज? क्योंकि Zener डायोड के अक्रॉस रिवर्स बायस में VZ कांस्टेंट रहता है. और ये कितनी वोल्टेज है? दैट इज VZ, Zener ब्रेकडाउन वोल्टेज. ठीक है, वो मैंने वहां लिखा भी है, Zener ब्रेकडाउन वोल्टेज. अब देखिए, अगर Zener डायोड के अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन हो गई, Zener डायोड है इन शंट इन पैरेलल विद RL, तो RL के अक्रॉस भी वही कांस्टेंट वोल्टेज हो जाएगी मेंटेन, है ना. हमाद, how much constant voltage will be across RL? Ahmad. Yes, sir. अपना कैमरा ऑन करो बेटा. Yes, sir. How much voltage will be maintained across RL? Sir, constant VZ. VZ क्यों होगी VZ? सर क्योंकि जो जेनर डायोड है ये रिवर्स बायस है और ये कांस्टेंट जितनी कांस्टेंट वोल्टेज करता है ये. Yes, it means that V output will be now equal to VZ. VZ is constant, therefore V output will be constant. Okay, V output will be constant. I'll ask some students. शेख लुबना है यहाँ पे? यस सर. बेटा कोई सवाल है आपको, ये समझ में आया? यस सर, समझ आया. ओके, बुशरा है? यस सर. क्या सवाल है बेटा? कुछ नहीं. ओके, व्हाट अबाउट आमिर यूसुफ? आमिर यूसुफ, व्हाट अबाउट अरूजा? यस सर, समझ आया. कोई सवाल तो नहीं है बेटा? नो सर. शोमिया? जी सर, आया समझ. कोई सवाल है? नो सर. महराज दीन? यस सर. क्या सवाल है बेटा? सर एक कंफ्यूजन है. हाँ बताओ. सर जब आपने बोला ये मतलब सर आपने अभी बोला ये कांस्टेंट रहेगा VZ एंड वेरिंग IZ, मतलब ये जो करंट होती है वो वेरी भी हो सकती है. बट जब आपने वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ा है तब आप सेकंड केस में बोला मतलब अगर ये करंट जो है अगर वेरी हो जाएगी तो उससे वोल्टेज भी वेरी हो सकती है. मतलब अगर करंट नीचे हो जाएगी तो वोल्टेज ऊपर भी जा सकती है. ठीक. तो यहाँ कैसे वोल्टेज सेम रहेगी? अच्छा. देखिए उस वक्त, हाँ ये ठीक सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है. आपके दिमाग में अगर कोई कंफ्यूजन रहता है प्लीज़ आस्क इट, जैसे इसने पूछा है वो पूछा भी करें. अगर मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो आई कैन गो फॉर दैट पॉइंट. इन दैट वे आई कैन ऑल्सो लर्न एंड यू विल बी ऑल्सो लर्निंग. आप हया महसूस ना करें पूछने में. आई अप्रिशिएट महराज क्वेश्चन. नाउ सी, ही सेड दैट जब मैं पहले कह रहा था लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब करंट वेरी होगी आई और ये चेंज होगी, या तो इंक्रीज होगी तो अदरवाइज डिक्रीज होगी, देन द वोल्टेज चेंजेस.
वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस चेंजेस। लेकिन यहाँ मैं कह रहा हूँ अगर करंट चेंज हो रही है वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, है ना। ये कैसी बात है? देखिए वो जो बात हो रही थी वो हो रही थी लोड रेजिस्टर के अक्रॉस बात, है ना। वो लोड रेजिस्टर के अक्रॉस बात हो रही है। और ये करंट हो रही है चेंज, जिसमें मैं कह रहा हूँ करंट चेंजेस बट वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, ये हो रही है बात ये हो रही है बात अक्रॉस जीनर डायोड, अक्रॉस जीनर डायोड। अब देखिए जीनर डायोड के अक्रॉस करंट हो सकती है चेंज, उसके अक्रॉस वोल्टेज भी कांस्टेंट रह सकता है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि रेजिस्टर के बारे में हमें पता है, रेजिस्टर के बारे में हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर। रेजिस्टेंस ओम्स लॉ करता है फॉलो। हम कहेंगे अगर वोल्टेज, अगर करंट चेंज हुई तो आपकी वोल्टेज भी इंक्रीज होगी। इफ करंट विल इंक्रीज वोल्टेज विल इंक्रीज। व्हाई? बिकॉज वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो जो ही करंट चेंज होगी आपकी वोल्टेज चेंज होगी। लेकिन डायोड्स के बारे में ये मामला नहीं है। व्हेन यू कम टू डायोड्स, डायोड्स ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं। इन डायोड यू कैन नॉट से VD इज इक्वल टू ID RD, डायोड रेजिस्टेंस एंड करंट इनसाइड द डायोड, क्योंकि डायोड नॉन लीनियर डिवाइसेस हैं। ये तो इसमें ओम्स लॉ नहीं फॉलो होता है। इस वजह से जो वो वहां बात हो रही थी पहले, वो हो रही थी लोड रेजिस्टर की बात। मैंने कहा था लोड रेजिस्टेंस में जब करंट चेंज होगी तो उसका वोल्टेज चेंज होगा। लेकिन ये जो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि करंट कैन चेंज बट वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, ये असल में है नॉन लीनियर डिवाइस, ये डायोड है। डायोड में ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। हम वो अप्रोक्सीमेशन यहाँ नहीं कर सकते हैं। डायोड कैन एक्ट इन अ डिफरेंट वे, इट डिपेंड्स अपॉन द डोपिंग। इसमें जो पी इंजेक्शन है ये डोपिंग आप चेंज करेंगे। मुझे पता नहीं है आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन पढ़ा हुआ होना चाहिए था। जो सिलिकॉन के वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सिलिकॉन डायोड के वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कुछ ऐसे हैं, ठीक है, वो कुछ ऐसे हैं, ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे हैं, समथिंग लाइक दिस। लेकिन जो जर्मेनियम का डायोड है, हालांकि नॉर्मल डायोड है, रेगुलर डायोड है, उसका कुछ ऐसे है, बिल्कुल अलग है। हालांकि डायोड की जो एटम का स्ट्रक्चर है जर्मेनियम का और जो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है, उस वजह से इतनी वेरिएशन है। हालांकि है तो डायोड दोनों, सिर्फ मटेरियल डिफरेंट है। और इनफैक्ट अगर आप इनमें डोपिंग कंसंट्रेशन, जो पी में कंसंट्रेशन होती है वो चेंज करेंगे, एन में कंसंट्रेशन ऑफ डोपेंट्स, इफ यू नो एक्सेप्टर आयंस एंड डोनर आयंस, बोरॉन, पेंटावैलेंट एटम्स एंड ट्राइवैलेंट एटम्स, अगर आपको थोड़ा सा पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, मैडम ने पढ़ाया होगा, आई एम श्योर उन्होंने पढ़ाया होगा। अगर आप उनकी कंसंट्रेशन करेंगे चेंज, उन्होंने वो भी पढ़ाया होगा, उससे कितनी फर्क पड़ती है इन डायोड्स में। तो डायोड्स असल में रेजिस्टर्स नहीं है, डायोड्स बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करते हैं, उनमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। महराजदीन समझ में आया बेटा आपको? महराजदीन? यस सर, यस सर। हाँ, इसलिए वो जो आर्ग्यूमेंट था वो रेजिस्टर के अक्रॉस ट्रू था, लेकिन वो यहाँ डायोड्स में ट्रू नहीं होगा। डायोड्स में आपको ऐसे देखना है। अब मसला है हाउ विल वी चेक वेदर डायोड्स में करंट वेरी होती है या वोल्टेज वेरी होती है, ये कैसे? इसमें कोई और तरीका नहीं है एक्सेप्ट इट्स वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। V means voltage, I means current. VI characteristics are the plot of a device which gives relationship between voltage and current. VI कैरेक्टरिस्टिक एक किस्म का आई कार्ड होता है डिवाइस का। जिस तरीके से इंसान का आई कार्ड होता है, यू आइडेंटिफाई अ पर्सन बाय हिज आई कार्ड, उसका एड्रेस वगैरह ये कहाँ रहता है। इसी तरीके से डायोड अगर आपको पहचानना है या कोई भी डिवाइस पहचाननी है जो सेमीकंडक्टर डिवाइस की है, उसमें सबसे पहले बात होती है VI कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि जब हम इसको वोल्टेज देंगे करंट कैसे वैरी होगा, जब करंट देंगे तो वोल्टेज कैसे डेवलप होगी। तो डायोड्स को हमेशा VI कैरेक्टरिस्टिक्स से ही पहचाना जाता है। जीनर डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम देखते हैं रिवर्स बायस में, ये बहुत ही अजीब है, अनोखा है। अनोखा इस तरीके से है कि एक पॉइंट के बाद, ये जब मैं कराऊंगा ये लैब में इंशाल्लाह जीनर डायोड, मैं इसमें और एक्सप्लेनेशन दूंगा वहां पे कि व्हाई इट एक्ट्स एज अ जीनर वोल्टेज रेगुलेटर। और उस वक्त में ये पॉइंट जरूर अगर आप याद दिलाएंगे, मैं रेजिस्टर को इसको कंपेयर करूंगा डेफिनेटली। इसका जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत ही अजीब है, अनोखा है। अनोखा इस लिहाज से है, इट इज यूनिक बिकॉज आफ्टर सर्टेन पॉइंट VZ the current increases drastically but voltage does not change। ये सिर्फ जीनर डायोड की खूबी है, ये नॉर्मल रेगुलर डायोड की खूबी नहीं है। अब इसकी क्यों है ये खूबी, वो आपने पढ़ा होगा, आई एम श्योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में मैम ने पढ़ाया है, क्योंकि व्हेन आई वाज टीचिंग अदर ब्रांच आई हैड आल्सो टॉट दैट। अगर नहीं भी पढ़ा होगा, मैं लैब में इसको डिस्कस जरूर करूंगा कि इसमें असल में जीनर डायोड कैसे डिफरेंट है रेगुलर डायोड से। बट यस, यू हैव टू रिमेंबर कि
रेजिस्टर्स का बिहेवियर डिफरेंट है, वहाँ ओम्स लॉ फॉलो होता है, लेकिन डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, इनमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। इनफैक्ट हमारे जो इंडक्टर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं, उसमें भी ओम्स लॉ नहीं फॉलो होता है। ठीक है, तो मैं इसमें आगे और कुछ ऐड करना चाहूँगा। किसी और बच्चे को कोई सवाल है, प्लीज़ आस्क मी, अगर कोई बच्चा है। सर हाँ मिनिश बताओ बेटा। आपने कहा ना अभी लोड रेजिस्टर के अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज होता है। if that breakdown voltage will be less than VZ, मतलब कांस्टेंट वोल्टेज, तो Zener डायोड कंडक्ट करेगा फिर भी? हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। देखो अब क्वेश्चन ये है कि अगर Zener voltage reverse, this is reverse bias region first of all, this entire quadrant, okay, this is reverse bias region। अब बात ये है, अगर पॉइंट है Zener voltage का यहाँ, okay, it is here somewhere, okay, just a second। ओके, इफ दिस इज V Zener पॉइंट, ठीक है, ये Zener पॉइंट है और ये सारा रीजन हमें पता है रिवर्स बायस है। अब वोल्टेज रिवर्स बायस में यहां से इतना ही क्यों ना आए, हम कहेंगे Zener डायोड को रिवर्स बायस है। लेकिन अगर वोल्टेज यहां से यहां तक आई, यानी इसके कम है, ये मान लीजिए ये लाइन ये है, इस लाइन से कम है, क्या Zener डायोड कंडक्ट करेगा? ये कंडक्ट करेगा, लेकिन बहुत कम। ये जो कर रहा है, देखो आप यहाँ जो करंट है, इट इज वेरी स्मॉल। हाउ मच इट विल बी इन माइक्रो एम्पियर्स, ये बहुत कम होगी। Zener डायोड रिवर्स बायस में Zener पॉइंट तक नॉर्मल डायोड एक्ट करता है, जैसे नॉर्मल डायोड होता है Zener पॉइंट तक, Zener पॉइंट तक। Zener पॉइंट के बाद ये इसमें जो करंट है वो बहुत इंक्रीज होगी, Zener इसके बाद बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। लेकिन अप टू दिस पॉइंट, यानी इस लाइन तक, इसमें होगी करंट, लेकिन बहुत कम। कितनी कम होगी? माइक्रो एम्पियर्स में। हो सकता है जो दूसरी वाली लाइन है, ये वाली ग्रीन वाली, हो सकता है ये मिली एम्पियर्स में है, हम इसको देखेंगे प्रैक्टिकली। लेकिन हाँ, जहां तक वो ब्लू वायलेट लाइन पहुंच रही है, यानी Zener पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते इसको करंट होगी बहुत कम होगी। सडनली ये ऑन होता है। कब होता है ऑन? Zener पॉइंट पे। इसमें भी जैसे हमने डायोड के वो आइडियल मॉडल देखे थे, अगर हम इसका आइडियल मॉडल देखेंगे, इसको कभी कभी किताबें ऐसे करती हैं आइडियल मॉडल इसका रिप्रेजेंट। आइडियल मॉडल अप टू VZ दे से इन रिवर्स बायस करंट इज नेग्लिजिबल एंड इट इज जीरो। after VZ or at VZ they say current is infinity here, and यहाँ पे कहते हैं I is less nearly equal to zero। ठीक है बिनेश? यस सर। और किसी को कोई सवाल है, प्लीज आस्क मी। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बताओ बेटा। तो जब हमारी इनपुट वोल्टेज अगर हम डिक्रीज करेंगे ना, तो जो ऑल ओवर द करंट होगी वो भी शार्पली डिक्रीज होगी, तो जिसकी वजह से जो जो फिर RS के अक्रॉस होगी ना हमारी वोल्टेज, वो भी कम होगी ना, तब भी आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट होगी कि वो भी डिक्रीज होगी? हाँ देखो, असल में मामला ये है, ये आपको ये भी एक अच्छा सवाल है। रेगुलेशन के बारे में ये चीज़ आप हमेशा याद रखें। मैं रेगुलेटर को ऐसे रखूंगा, चाहे ये Zener डायोड है अंदर या ये एक IC है, बट आई विल जस्ट मेंशन इट एज अ ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, अब इसमें दो टर्मिनल्स होंगे, तो ये आप ऐसे समझो, ये जो ये डब्बा है ये है वोल्टेज रेगुलेटर। अब मैंने इस Zener डायोड का नाम रखा वोल्टेज रेगुलेटर। अब ये समझे आप, अगर ये इनपुट है, इन्होंने कहा अगर इनपुट चेंज होगा तो RS के अक्रॉस भी इनपुट चेंज होगा, तो क्या तब भी रेगुलेशन होगी? ये आपको समझना है। अगर इसमें रेगुलेटर की वोल्टेज है 5 वोल्ट्स, यानी ये तय किया गया है कि 5 वोल्ट के बाद ये रेगुलेट करेगा, यानी अगर आप 5 वोल्ट्स, ये आपको आउटपुट मेंटेन करेगा 5 वोल्ट कांस्टेंट। ओके, 5 वोल्ट कांस्टेंट। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, आपके इनपुट में, ये इसका आउटपुट है, ये इसका आउटपुट है, दिस इज V आउटपुट। ये जो रेगुलेटर का इनपुट है, इनपुट टर्मिनल्स, वो ये है, दिस इज V इनपुट। इनपुट में इसको DC वोल्टेज उतनी ही होनी चाहिए, इट शुड बी एट लीस्ट 5 वोल्ट्स, कम से कम 5 होना चाहिए। 5 के ऊपर हो सकती है, लेकिन 5 के नीचे नहीं हो सकती है, 5 के नीचे नहीं हो सकती। यानी अगर इस डायोड को आप ऐसे करें, यहां देंगे 4.9 वोल्ट्स, ठीक है, अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5 वोल्ट्स मिलेगा कांस्टेंट, वो नहीं होता है।
आपको हमेशा जीनर वोल्टेज से के बराबर या उसके ऊपर होनी चाहिए वोल्टेज। यहाँ देखिए आप, अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ पे भी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में ये कहा कि जीनर डायोड तब करता है रेगुलेट जब इसमें जो जीनर जो इनपुट वोल्टेज होगी वो कम से कम होनी चाहिए जीनर वोल्टेज तक या इससे ज्यादा, या इससे ज्यादा। ठीक है, अगर इससे कम हुई, जीनर वोल्टेज से कम हुई ये रीजन, तब तो ये रेगुलेट नहीं करेगा। तो रेगुलेटर्स में एक चीज याद रखनी है, अगर रेगुलेट करना है आपको आउटपुट, इसका इनपुट होना चाहिए बराबर रेगुलेटिंग वोल्टेज। यानी इसमें अगर आपको 5.1 होगा यदि हमेशा 5.5 वोल्ट्स, अगर 5.9 भी होगा तो ये देगा 5 वोल्ट्स, अगर इसमें 6 भी होगा ये देगा 5 वोल्ट, इनपुट में 10 होगा ये देगा 5 वोल्ट। लेकिन अगर इनपुट में हुआ 3.9, 3.9 इज लेस देन रेगुलेटर वोल्टेज, तो ये हमेशा आउटपुट में 3.9 ही देगा। अगर 2 वोल्ट्स होगा इनपुट में, क्योंकि वो रेगुलेशन वोल्टेज से कम है, तो ये देगा 2 ही वोल्ट्स। आपको समझ में आया रिहाब? यस सर, यस। हाँ, तो रेगुलेशन वोल्टेज जो होती है रेगुलेटर की, इनपुट जो है वो उस वहां तक कम से कम पहुंचना चाहिए। तो रेगुलेशन होती है उसके बाद की वेरिएशंस की, यानी अगर आपकी 5 वोल्ट तक रेगुलेट करनी है, 5 वोल्ट से ज्यादा अगर इनपुट आया तब ये काटेगा उसको एंड इट विल मेंटेन ए कांस्टेंट। उससे कम नहीं करता है, उससे कम ये खुद भी कम हो जाता है। ठीक है, उससे कम ये खुद भी। और किसी को कोई सवाल है? एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, ओके, चलिए मैं आगे चलता हूं अब। तो फिलहाल हम कह रहे थे जीनर डायोड, मैंने कहा जीनर डायोड एंड लोड रेजिस्टर हियर, they are in parallel, they are in parallel. Okay, so I'll write down this thing here. Zener diode and load resistor are in parallel, they are in parallel. Okay, hence the circuit is called shunt regulator. इसीलिए इसको शंट रेगुलेटर कहते हैं, क्योंकि जो रेगुलेटिंग एलिमेंट है, रेगुलेटिंग एलिमेंट इसमें क्या है, वो है जीनर डायोड जो रेगुलेशन करता है वोल्टेज की। रेगुलेटिंग एलिमेंट इज इन शंट विद लोड रेजिस्टेंस, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ शंट रेगुलेटर, it is known as a shunt regulator. But which one we are using as a shunt regulator? Zener diode. So Zener diode is as a shunt regulator, that's why we say it is a shunt regulator. And as said by रोल नंबर 12, उसने कहा है वी आउटपुट विल बी ऑलवेज इक्वल टू वी जेड। इसमें जो आउटपुट होगा, अब देखिए जो आउटपुट यहाँ है, जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज इन दो पॉइंट्स के दरमियान भी है, ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है। सो वी आउटपुट इज समवेयर हियर, ओके, एंड इट विल बी इक्वल टू वी जेड बिकॉज वी जेड इज across the Zener diode. So V output will be always equal to VZ. V output will be always equal to VZ. So in this circuit, V output will be equal to V of Z. Okay, so that is the first point, equation number 1. Equation number 2, what is source current equal to? Source current. What is source current equal to? अब देखिए मेरे पास एक सर्किट है, ये ऐसा बना है, मैं इसको ऐसे बनाना चाहूँगा। I'll redraw this circuit here. Okay, let me redraw it circuit. So we have one voltage, then we have R of S, then we have I of S, और यहाँ एक वोल्टेज सोर्स है। यहाँ तो जीनर डायोड है, अब ये कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन कर रहा है ना, ये जीनर डायोड कर रहा है कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन। आई कैन रिप्लेस इट बाय अ वोल्टेज सोर्स, इट्स इक्विवेलेंट सर्किट विल बी वोल्टेज सोर्स। तो क्या होगा वो वोल्टेज सोर्स, उसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे सर्किट में, पैरेंट सर्किट जो है वो ऊपर से है और इसका नेगेटिव टर्मिनल नीचे से है, और इसमें जो अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो मेंटेन कर रहा है इट इज VZ, इज इट फाइन उबैर? ठीक है ये? जी सर। महराजदीन ठीक है बेटा? यस सर। बासित इज हियर, बासित? यस सर। ठीक है बेटा। रिजवान? जी सर। Okay, Rizwan will tell me what will be I of S in the circuit. How can we calculate I of S? पहले नेट वोल्टेज होगा ये इनपुट वोल्टेज माइनस VZ. This is V input. Okay. V input. VS. This is VS है ना? ये हमने VS लिखा है वहाँ पे। हाँ। अब बताइए कैसे होगा ये? VS minus VZ. VS minus VZ. Very good. Then divide होगा? RS divided by RS. Very good. So please remember that source current can be calculated in this circuit.
source current is always equal to Vs minus Vz divided by R of S. Okay, R of S. KVL मैंने इसमें अप्लाई किया. We used KVL to calculate this equation. ये उतनी ज़्यादा बहुत ये नहीं है, ठीक है. और if you note down from the circuit, यहाँ इसमें एक और एलिमेंट भी था जो मैंने ड्रॉ नहीं किया था, तो वो R of L है. और मैंने ये भी दिखाया था उस R of L के अक्रॉस जो करंट है वो है लोड करंट I of L, और जो जीनर डायोड के अक्रॉस करंट है वो है I of Z, और ये है I of S, है ना. If we apply KCL at node A, we will see that IS is equal to IZ plus IL. ठीक है, summation of all incoming currents is equal to summation of all outgoing currents. So I can also write down IS, it is equal to IZ plus I of L. IS plus I of L. This is equation number 2, and this is equation number 3. Okay. Now see, you should remember this thing for a Zener diode. For proper operation of this circuit, for proper operation of this circuit, current through RS, that is I of S, current through R of S, which is basically I of S, must be at least equal to, must be at least equal to the sum of minimum Zener current, and specified load current, and specified load current. Okay, now see, what I am saying here is, I am saying that I of S must be at least equal. At least equal means कम से कम ये इसके बराबर होनी चाहिए. अगर ये कम से कम इसके बराबर होनी चाहिए तो इसका ये मतलब भी है इससे ज़्यादा भी हो सकती है. कम से कम इतना होना चाहिए, तो इसका मतलब है ज़्यादा भी हो सकता है. So IS must be at least means it must be greater or equal to what? IZ minimum plus I of L. Okay, this is what I have said. I'll explain this thing now. Please note down here, what is IZ minimum? IZ minimum is the minimum Zener current from VI characteristics. ठीक है, IZ minimum है VI characteristics, यानी IZ minimum वो current है Zener diode के across after which it acts as a Zener regulator. इससे पहले ये Zener regulator नहीं होता है. IZ minimum is a point on current axis after which it acts as a voltage regulator, before which it does not act as a voltage regulator. ठीक है, तो प्रॉपर ऑपरेशन के लिए IS should be greater or equal to IS minimum plus I load. IS minimum का मतलब प्रॉपर रेगुलेशन का मतलब, यानी अगर जीनर रेगुलेशन करानी है, अगर जीनर रेगुलेटर को प्रॉपरली जीनर रेगुलेटर यूज होना है इस सर्किट में, इफ इट हैज टू एक्ट एज अ जीनर रेगुलेटर, फर्स्ट कंडीशन इज इट्स करंट शुड बी ग्रेटर देन IZ मिनिमम. तो पहले इसमें कम से कम इतनी करंट तो फ्लो होनी चाहिए, तभी जाके ये रेगुलेट करेगा. दूसरी बात, जो आपका लोड है, and must be at least equal to sum of minimum Zener current and specified load current. दूसरी बात, जो लोड करंट है, स्पेसिफाइड लोड करंट, आप इसमें फैन लगा रहे हो, आप इसमें हीटर लगा रहे हो, आप इसमें इलेक्ट्रिक केटल लगा रहे हो, आप इसमें लैंप लगा रहे हो इस सप्लाई में, उसकी अपनी स्पेसिफाइड लोड करंट होगी. तो उन दो को ऐड करना है, एक तो लोड करंट और जीनर मिनिमम करंट को ऐड करना है. तो आपकी सप्लाई जो सोर्स वोल्टेज है वो कम से कम उतनी करंट देनी चाहिए. देखिए, जो करंट लोड में यूज होगी, ये हमारा लोड है, जो करंट लोड में यूज होगी वो आएगी कहां से? वो असल में आएगी सोर्स से. ठीक है, वो आएगी असल में सोर्स से. जो करंट लोड लेगा वो देगा कौन असल में इस सर्किट में से? सोर्स. सो सोर्स शुड बी एबल टू सप्लाई टू करंट्स एट लीस्ट. विच करंट? वन शुड बी, it should be able to supply Zener current, minimum Zener current and specified load current. जब ये दो बराबर देगा तब जाके ये Zener regulator काम करेगा. रिजवान, ये समझ में आया आपको? Yes sir. हाँ, किसी को सवाल है? That is why I said that IS, source current, that means source should be able to supply
एट लीस्ट द स्पेसिफाइड लोड करंट ऑफ और लोड, जो लोड हमें चलाना है इस पे, और मिनिमम जीनर करंट जिसके बाद ये वोल्टेज रेगुलेटर एक्ट करता है, उतनी ये देना चाहिए। क्योंकि करंट आएगी सप्लाई से, करंट आएगी उसमें सोर्स से, सोर्स ही सब कुछ देता है, लोड को भी सोर्स ही करंट देगा। जीनर को जो वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए मिनिमम करंट चाहिए वो भी सोर्स से ही आएगी। तो ये दो करंट सोर्स कम से कम देना चाहिए। दैट इज व्हाई आई सेड IS शुड बी ग्रेटर और एटलीस्ट इक्वल टू IZ। सर मगर अगर हम सप्लाई वोल्टेज जो है ना VS वो इंक्रीज करेंगे उसकी वोल्टेज, तो वो तो वोल्टेज ड्रॉप जो अक्रॉस RL होगा वो तो इंक्रीज हो जाएगा ना अल्टीमेटली। हाँ हो जाएगा, उससे क्या होगा? तो फिर ज़ीनर डायोड ब्रेकडाउन का क्या होगा फिर? पहली एक बात स्टिल ऑपरेट्स इन रीजन। हाँ, देखो पहली बात इन्होंने कहा अगर VS को इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे पहले मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। इन्होंने कहा अगर VS को इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज अक्रॉस RS विल आल्सो इंक्रीज। वो इसलिए होगा बिकॉज V ऑफ S मान लीजिए, नहीं VR ऑफ S इट इज इक्वल टू IS इंटू R ऑफ S। R ऑफ S तो कांस्टेंट है ही, ये तो कोई चेंज नहीं कर रहा है। वी आर इंक्रीजिंग V ऑफ S, उसकी वजह से करंट चेंज होगी, ठीक है, करंट बेसिकली इंक्रीज होगी और उसकी वजह से VR ऑफ S चेंज होगा। इवन इफ VR ऑफ S अगर चेंज भी होगा और वो इंक्रीज भी होगा, स्टिल देयर विल बी वोल्टेज रेगुलेशन, फिर भी इसमें वोल्टेज रेगुलेशन होगी, ठीक है, because eventually you are applying certain voltage, a higher voltage at P side also। आप माइनस टाइम्स जो कर रहे हो वहां से भी तो आप एक ये कर रहे हो वोल्टेज। देखिए जब VS इंक्रीज होगा, एक चीज आपको इसमें प्रैक्टिकल फिनोमेना देखना है, जब हम VS को इंक्रीज कर रहे हैं तो नेगेटिव टर्मिनल पे एक नेगेटिव नंबर ज्यादा बढ़ रहा है। जैसे VS था -2 वोल्ट्स, इसको आपने इंक्रीज किया -15 वोल्ट्स या +15 वोल्ट्स तक इंक्रीज किया, तो कॉन्सिक्वेंटली P साइड पे तो -15 हो रहा है अप्लाई। -15 इज स्मॉलर नंबर देन -2 वोल्ट्स। प्लीज रिमेंबर दैट -2 बड़ा है और -15 छोटा है। उसकी वजह से हमें लग तो रहा है कि यहाँ RS पे भी पोटेंशियल ड्रॉप इंक्रीज हो रहा है, तो शायद जो जीनर वोल्टेज का N टर्मिनल है, N साइड है, उस पर शायद कम वोल्टेज हो रही है। असल में ऐसी बात नहीं है, नीचे से भी तो हम और डिक्रीज कर रहे हैं, ये ड्यूअल इफेक्ट होता है। सो ओवरऑल इफेक्ट इज द वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेस बाय दिस ऑपरेशन। और कोई सवाल है? ठीक है, यहाँ तक ये ठीक है? Okay, if this is okay, then I will explain now what is the next step now. Okay, I'll move forward. Now, you should remember that what should be the source voltage. Now see, अभी तो हमने करंट्स देखी। सोर्स करंट, सोर्स की जो करंट है वो इतनी पावरफुल होनी चाहिए, इट शुड बी एबल टू सप्लाई एट लीस्ट 2 डिफरेंट करंट्स। एक तो लोड को भी देना चाहिए ये, क्योंकि जो स्पेसिफाइड लोड होगा मोटर की अलग होगी, जो भी आपको लगाना है लोड रेजिस्टेंस, और जो जीनर डायोड को खुद चाहिए मिनिमम जीनर करंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर इट टू ऑपरेट। तो एक तो हमने ये चीज कही, व्हाट शुड बी द वोल्टेज दैट द सोर्स शुड बी एबल टू सप्लाई। अब इसमें देखिए V of S, okay, I will talk about now V of S. Now see, V of S should be able to supply 2 different voltages, okay। एक वोल्टेज, अब यहाँ देखिए इस चीज पे, अगर इसमें हम देखेंगे, इसमें 2 पोटेंशियल ड्रॉप्स हैं। V of S तो ये है, इसके बाद 2 पोटेंशियल ड्रॉप्स हैं। V of S is equal to potential drop across resistor and potential drop across zener, है ना? Ubair, is it fine? जी सर। ठीक है, Rizwan, is it fine? Yes sir. Okay, Rizwan, what should be then V of S equal to? V of S should supply एक तो जीनर वोल्टेज VZ देना चाहिए, और RFS सर ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा RFS पे, पोटेंशियल ड्रॉप across R of S, ठीक है। So V of S should be equal to VZ plus what is potential drop of R of S? It is IS into RS. RS. Yes, it is IS into RS. Very good. So V of S should be at least, or it should at least provide this voltage drop. So we can say V of S should be greater or equal, क्योंकि ये कम से कम इतना देना चाहिए, लेकिन ज्यादा भी दे सकता है। ज्यादा वोल्टेज होगी तो फिर भी रेगुलेशन होगी, कम नहीं होनी चाहिए। It should be VZ plus IS. What is IS equal to? IS from equation 4.
from equation 4. IS is equal to IZ minimum plus IL specified into RS. Is it fine? ठीक है ये? This is the necessary condition for voltage regulation. एक तो equation 4 और equation 5 ये बहुत अहम है. Is it fine? ठीक है ये? Rizwan? जी सर. Okay, now there are two different terms in this. अब इसमें दो चीजें हैं. देखिए जब इनपुट चेंज होगा तो रेगुलेटर आउटपुट रेगुलेट करेगा, या लोड करंट चेंज होगी और रेगुलेटर फिर से आउटपुट रेगुलेट करेगा. इसमें दो चीजें हम डिफाइन करते हैं. वन इज नोन एज लाइन रेगुलेशन, अनदर इज नोन एज लोड रेगुलेशन. ओके, सो आई विल मूव टू लाइन रेगुलेशन फर्स्ट. सो आई विल एक्सप्लेन लाइन रेगुलेशन. ये बहुत अहम है. लाइन रेगुलेशन. Line regulation is basically, it is a process or ability of a regulator or process of keeping V output constant. V output तो हमेशा regulators में constant ही रखना होता है, irrespective of fluctuations in line voltage, or AC supply. ठीक है, AC supply. Now see, if you have variations in input, that is in AC supply, and your regulator is keeping your output constant, then the ability of the regulator to keep output constant with changes in input AC is known as line regulation. ठीक है, it is known as line regulation, or it is a process of keeping output constant irrespective of fluctuations in line voltage. तो असल में मामला ये है, ये आपका रेगुलेटर है, ये आपका आउटपुट है, लेकिन चेंजेस यहाँ हो रही है. चेंजेस या तो ऊपर यहाँ हो रही है या तो नीचे यहाँ हो रही है. तो लाइन रेगुलेशन बेसिकली इसको डील करता है. ठीक है, सो इन दिस load current is considered to be constant. Please remember that in line regulation, load current is a load current I of L is considered to be constant. It is considered to be constant. ठीक है, तो it is considered to be constant. Now see, इसको ध्यान से आप देखिए इस phenomenon को. If line voltage changes, line voltage means जो मान लीजिए आपके बाहर पोल से दो लाइंस आ रही हैं AC वोल्टेज आपके घर में, और फिर उसी से आप पावर उठाते हो एक DC पावर सप्लाई के लिए. अगर उसकी वोल्टेज चेंज हुई, मान लीजिए उसकी वोल्टेज इंक्रीज हुई, ठीक है, what will happen to V of S? Riyan will tell me. सोर्स वोल्टेज को क्या होगा, एक इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? See, you have, आपके पास एक पोल है बाहर कहीं, उसमें दो लाइंस आ रही हैं ऐसे, ठीक है, AC वोल्टेज है, और अब ये इंक्रीज हो रहा है, and this is your VS. When line voltage changes, what will happen to VS, Riyan? Sir, voltage source will get increased. हाँ, voltage will get, VS will also increase. When line voltage will increase, आपकी लाइन बाहर से इंक्रीज हो रही है, obviously जो आपका सोर्स है आपके DC पावर सप्लाई के लिए वो चेंज होगा, it will also increase. If VS will change, if VS will increase, okay, if VS will increase, what will happen to source current from the circuit? Mohsin, source IS को क्या होगा? If VS will increase, what will happen to IS? सर इंक्रीज होगा. हाँ, IS भी इंक्रीज होगा, क्योंकि IS VS से आता है. VS ज्यादा होगा तो IS ज्यादा होगी. अच्छा, अगर IS इंक्रीज हुआ, सईद शमसुल आफाक, what will happen to Zener current, IZ? सर वो भी इंक्रीज होगी.
वो भी इंक्रीज होगी क्योंकि IS इज इक्वल टू IZ. IS is directly proportional. IZ is directly proportional to IS. Okay. So if VS will increase, IS also increases. IS also increases. If IS will increase, Zener current also increases. Zener current also increases. But voltage across Zener diode does not change. But voltage across Zener diode does not change. ये तो constant रहता है, ठीक है? So V output remains constant. V output remains constant. That is how the line regulation is being done. इसी तरीके से लाइन रेगुलेशन होती है पावर सप्लाई में, ठीक है? तो लाइन रेगुलेशन में किसी को कोई सवाल तो नहीं है, मैंने इसको बहुत ब्रीफली समझाया है. So line regulation is ability of a power supply to maintain its constant output irrespective of changes or fluctuations in line voltage, in the input line voltage. ठीक है? Input line voltage. शमसुल आफाक अपना कैमरा ऑन करो जरा बेटा. जी सर. Okay. The another term is load regulation. Load regulation. Load regulation. Load regulation. Okay. Before we move ahead. निगत को समझ में आया ये? यस सर. कोई सवाल तो नहीं है निगत? नो सर. अयमन को? अयमन बेटा? यस सर. कोई क्वेश्चन है? नो सर. What about अरबा? अरबा को क्या सवाल है? सर कोई कंडीशन जिसमें वी आउटपुट ज्यादा हो जाएगा, मतलब. अच्छा, हमाद आप बताओ. सर आपने बोला ना वी आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट, ये इसमें. हाँ. सर इज देयर एनी कंडीशन दैट वुड लीड टू जिसमें वी आउटपुट ज्यादा हो सकता है? इन लाइन रेगुलेशन? यस सर. देयर विल बी नो कंडीशन. ऐसा कभी नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हम रेगुलेटर को एज्यूम कर रहे हैं इट मेंटेन्स ए कांस्टेंट वोल्टेज. So we do not assume that a failure or a breakdown will happen in regulator. Voltage will only increase in case regulator element or a regulating element will fail to regulate. यानी अगर ये डिवाइस डैमेज हो जाएगी तब जाके वोल्टेज इंक्रीज हो सकती है. आपको समझ में आया? यस सर. यस सर. और कोई कंडीशन नहीं है. प्रैक्टिकली आपके दिमाग में कुछ कंडीशन आ रही है हमाद? नहीं सर, यही क्वेश्चन था, आपने वो क्लियर किया. हाँ, अगर देयर इज अ फेलियर इन द रेगुलेटर, अगर देखो ये जो ये रेगुलेटिंग एलिमेंट है, हम इसमें एज्यूम करें ना, आपने जो रेगुलेटर इसमें लगा है, हाँ आउटपुट हो सकता है चेंज. अब अगर ये रेगुलेटिंग एलिमेंट विल फेल टू रेगुलेट, the condition is only when it will fail, it will only fail under one condition, when the element will be damaged, when it will be damaged, जब इसका pn जंक्शन ही डैमेज होगा तब जाके ये ऐसा हो सकता है. वरना प्रैक्टिकली कोई ऐसी कंडीशन नहीं है. क्योंकि रेजिस्टेंस का भी इफेक्ट नहीं हो सकता है. रेजिस्टेंस आपके दिमाग में क्यों है? रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होगा इसमें. रेजिस्टेंस का एक ही काम है यहाँ पे. देखो इस जो रेजिस्टेंस यहाँ है, इट इज ए करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस. जो ही आप VS करोगे इंक्रीज, VZ भी इंक्रीज, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा. वो तो सही बात है, लेकिन उसका VZ पे कोई असर नहीं होगा. मैं एक चीज करूंगा, जब हम लैब में जाएंगे मैं इसको प्रैक्टिकली थोड़ा दिखाऊंगा. हम नोड A, अगर हम इसको A कहेंगे, सॉरी दिस इज A, अगर इसको A देखेंगे, इसको B कहेंगे, हम इसको वहाँ प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली मैं इसको वहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा. जीनर डॉयड हमें करना है वहाँ पे लैब में. मैं इसको वहाँ थोड़ा और कुछ जो कन्फ्यूजन्स हैं वो आप लिख के रखें, वहाँ पे इसको डिस्कस कर सकते हैं. लेकिन हाँ, इस रेजिस्टेंस का इस पर कोई असर नहीं होगा. अगर आप ये सोच रहे हैं कि VS इंक्रीज होने से IS इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस RS इंक्रीज होगा, उसकी वजह से VZ शायद कम होगा, वो बात नहीं है. तो असल में ये मामला ऐसा है. देखो, इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट इन दिस वे, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट इन दिस वे. ये है VS, ये है RS, ये जो है ये जीनर डायोड है. इसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, है ना. तो मान लीजिए RZ है जीनर डायोड. जो ही VS इंक्रीज होगा, ये असल में है वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क. ओके, ये जो अगर आप देखेंगे ये बनेगा वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. इट इज वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क. तो ये VS जो जितना ये इंक्रीज होगा,
इसका जो वोल्टेज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली बांटा जाएगा बिटवीन आर एस एंड आर जेड। जो ही वी एस इंक्रीज होगा, कुछ चीज तो यहाँ इंक्रीज होगी, लेकिन कुछ चीज यहाँ और इंक्रीज होगी। देहाब, आपको समझ में आया बेटा ये? यस सर। जो ही वी एस इंक्रीज होगा, कुछ पोर्शन इसको भी दिया जाएगा आर एस बेचारे को, और कुछ बांटा जाएगा आर जेड के अक्रॉस भी। तभी जाके तो ये केवीएल अप्लाई होगा, तभी जाके तो केवीएल्स विल बी दे विल सस्टेन, दे विल नॉट बी वायलेटेड। वीएस जो ही इंक्रीज होगा, जितने भी सर्किट एलिमेंट, देखिए कुछ भी वोल्टेज सोर्स हो, आपके अक्रॉस, आपके इसके अक्रॉस कितने भी सर्किट एलिमेंट है, ये तो वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क ही बनाएंगे। लेकिन जो ही आप वी इनपुट इंक्रीज करोगे, जो ही इसको बढ़ाया जाएगा, ये वी इनपुट असल में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन सारे रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस, R1 R3। अब कैसे होगा इनके अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट? अगर ये R1 इज इक्वल टू R, इट इज इक्वल टू R, ये सारे इक्वल है, देन इट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। सपोज V इन इज 3 वोल्ट्स, तब 1 वोल्ट यहाँ होगा, 1 वोल्ट यहाँ, 2 वोल्ट्स यहाँ और 3 वोल्ट्स यहाँ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी वोल्टेज। अगर रेजिस्टेंसेस अलग अलग वैल्यू की होंगी, उसी प्रोपोर्शन में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन पहली बात तो ये समझनी है, जो ही सोर्स वोल्टेज इंक्रीज होगा, इसके इंक्रीज होने से आर एस के अक्रॉस वोल्टेज जरूरी इंक्रीज होगी, लेकिन आर जेड के अक्रॉस भी तो होगी, जेनर डायोड के अक्रॉस भी तो होगी, क्योंकि इसको तो केवीएल मेंटेन करना है, वरना तो केवीएल ही वायलेट होगा। एक के अक्रॉस ज्यादा नहीं हो सकती है, दूसरे के अक्रॉस कम नहीं हो सकती है, unless and until they have different values of resistances. Is it fine, Rehab? जी सर। ठीक है, चलो मैं इसको रब करता हूँ। ओके, ऑलराइट। सो मैंने यही कहा था कि रेगुलेटर, हम पहले इसमें कंडीशन है लाइन रेगुलेशन में, हम इसमें एज्यूम कर रहे हैं दैट देयर इज अ रेगुलेटर, और जब व्हेन देयर इज अ रेगुलेटर, वी एज्यूम दैट रेगुलेटर इज वर्किंग, इट इज रेगुलेटिंग द वोल्टेज। तो आउटपुट तो हमेशा रेगुलेट ही होगा। अब सवाल था कि क्या आउटपुट कभी रेगुलेशन से बाहर चला जा सकता है? वो तभी होगा जब ये रेगुलेटर ही फेल होगा, जब ये काम ही होगा। मान लीजिए यू हैव अ पुलिसमैन, or a security guard at a gate, he is regulating the number of persons leaving the gate। अब सवाल ऐसा हो सकता है, क्या कभी कभार क्राउड एक साथ हुजूम में जाएगी? वो तभी होगा जब ये गॉड, द सिक्योरिटी पर्सनल, he will fail to do his duty। The only condition is that। But if he is very professional in his duty and he is able to control the crowd, then he can allow everyone as per the schedule। तो इसमें वोल्टेज एज पर शेड्यूल ही रहेगी, तभी जाके ये वायलेट होगा जब ये हमारा पुलिस वाला यहाँ बेचारा कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। तो वी हैव नाउ लोड रेगुलेशन। लोड रेगुलेशन एक दूसरी बात है, ठीक है। तो लोड रेगुलेशन में इट इज अ प्रोसेस ऑफ कीपिंग वी आउटपुट कांस्टेंट। अब देखिए, पहली बात तो पहला डिनोमिनेटर ये है, रेगुलेटर्स में आउटपुट वोल्टेज ही कांस्टेंट रहती है हमेशा। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कीपिंग वी आउटपुट कांस्टेंट, बट irrespective of changes in load current, irrespective of changes in load current। अब देखें, ऊपर वाले में लाइन रेगुलेशन में हम कंसर्न थे इनपुट साइड से, कि चेंजेस हो रही है इनपुट साइड से, लाइन वोल्टेज में हो रही है। लेकिन यहाँ ये मामला नहीं है, यहाँ मामला कुछ उल्टा है। यहाँ रेगुलेटर है और यहाँ चेंजेस है लोड करंट में। यहाँ जो I ऑफ L है, या तो वो ऊंची जा रही है ऊपर, या तो वो नीचे जा रही है। उसकी वजह से RL के अक्रॉस जो वोल्टेज चेंज हो रही है, उसकी वजह से जो VL और VL चेंज हो रही है, इंक्रीज या डिक्रीज। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए जो एबिलिटी एक रेगुलेटर में होती है, उसी को कहते हैं लोड रेगुलेशन। सो लाइन रेगुलेशन इज कंसर्न्ड विद द इनपुट साइड and load regulation is concerned with output side। That is the difference between these two। Okay, ये raw difference है। So in load regulation we know that we are basically concerned about the load current, और वहां पे जो है वहां load current constant है। अगर आप देखेंगे line regulation में मैंने लिखा IL is considered to be constant। IL is considered to be constant। In line regulation I said IL is considered to be constant, but in load regulation we say that IL changes।
IL changes. It is very important. तो यहाँ IL का ज़्यादा मामला है. ठीक है. Now see, in this case, in load regulation, voltage is considered. Voltage means voltage of source, Vs. Vs is considered to be constant. ठीक है. Voltage is considered to be constant. So Vs is basically constant. And this is equal to, and Is, because of voltage Vs is constant, Is will be also constant. It will be also constant. ठीक है. So if RL will change, if RL will decrease, अगर RL इस circuit में decrease होगा यहाँ, okay. If RL will decrease, what will happen to load current? I of L. Riyan, if RL will decrease, Rehab, okay, Rehab will tell me. If RL will decrease in this, what will happen to load current? So that will also increase, no? It will increase, yes. Because if RL will be 0, it will be a short circuit, current will be maximum. If RL will be very high, it will be open circuit, current will be 0. So if RL increases, if RL decreases, IL will increase. If IL will increase, IZ decreases. IZ decreases. Why? Because we know that I of S, it is equal to I of Z plus I of L. ये हमने ऊपर equation लिखी है. And IS is constant. We know that it is constant. If this is constant, अब IL increase हो रही है. अगर IL increase हो रही है, तो IS को constant करने के लिए IZ को decrease होना ही होना है. तभी जाके IS will be constant. From this equation, अगर IL increase हो रही है, IZ को decrease होना ही होना है. तब जाके IS को constant बोलेंगे हम, क्योंकि IS इसमें constant है. We said that IS is constant. Okay? We said that IS is constant. अबरार को समझ में आ रहा है बेटा? जी सर. ठीक है, कोई सवाल तो नहीं है? Okay, if IZ decreases, but we know VZ does not change. VZ does not change. Why? Because V output has to be maintained as constant. V out is constant. So this is basically load regulation, line regulation and load regulation. I'll draw a circuit very quickly and we'll solve it. आप इसमें कुछ values निकालेंगे, अपनी इस circuit को जल्दी बनाइए and we'll calculate some values. ठीक है? So I have this circuit like this, plus and minus. This is Vs, it is equal to 9 volt. And I have Rs equal to 50 ohms. Then I have a Zener voltage, Zener diode here. इसमें Zener voltage है कुछ ऐसे, Vz, and this is Iz. Then I have a variable load, R of L, और V output भी है यहाँ, V output, ये कुछ ऐसा है, और यहाँ जो है करंट वो है load current, I load. The question asks that it is given that Vz for the circuit, Vz is 6 volts. Okay, it is also given that Iz minimum, it is equal to 5 milliamperes, and PD max means power dissipated, maximum power dissipated across the diode. It is equal to 300 milliwatts. Okay, then it says that the question asks that find range of load current, such that output is maintained as constant. V output is 6 volts. Output is maintained as constant, equal to 6 volt. Okay, so we know that we have I of S here also. So first of all, we will calculate I of S. What is I of S equal to? Can somebody calculate it? What is I of S equal to? Rizwan, what is I of S, beta?
सर 5 मिली एम्पियर लूप 5 मिली एम्पियर कैसे है सर आई जेड प्लस आई एस सर आई जेड प्लस आई एल होता है ना बराबर आई ऑफ एस तो आईएल तो नहीं दिया गया है ना आईएल तो नहीं दिया गया वी एस माइनस वी जेड करके वैसे करना है हाँ बिल्कुल बिल्कुल वी एस माइनस 200 वी एस डिवाइड बाय आर एस डिवाइड बाई आर एस हाउ मच इज दैट 4 into 50 वी एस इज 9 वी जेड इज 6 है ना and RS is how much? Samira, RS is how much? R is 50. 50. Okay. चलो बताओ अब कितना है? How much is IS then? 4 divided by 50. बताइए. 4 divided by 50. 9 minus 6. 50 divided by 50. 0.06. अफसोस. 1 divided by 1 point. Okay. 0.06. 0 नहीं मुझे मिली एम्पेयर्स में बताइए. मिली एम्पेयर्स. How many milli amperes? How many milliamperes? Shadab will tell me. How many milliamperes, Shadab? Yes, sir. हाँ, how many milliamperes? कोई और बता सकता है? 6 milliampere. 6 milliamperes is incorrect answer. 60 milliamperes. 60 milliamperes. Yes, 60 milliamperes is the correct. 6 सही नहीं है, 60 ठीक है. Okay. चलिए IS तो हमें निकला. But we know that IS is equal to IZ plus I load. Okay. I load नहीं दी गई है. IZ minimum दिया गया है ना? तो जब IZ minimum होगा, IS is 60. IS is 60. तो IZ जब minimum दिया गया है, I'll write it down like this. If IS is constant, then IZ minimum, IS is equal to IZ minimum plus IL maximum. If IS is constant, then if Z will have minimum value, load will have maximum value. So that is why I said IZ minimum plus IL maximum. So what is IL maximum then? 55. 55. 60 minus 5 is equal to 55 milliamperes. ठीक है, बिल्कुल सही बात है. Okay, and IS is also equal to IS is equal to IZ maximum plus IL minimum. ठीक है, अब इसका उल्टा होगा. So what is IL minimum equal to? IL minimum is equal to IS minus IZ maximum. IZ maximum. Okay, and IS we know. IZ maximum कैसे होगा calculate? Power rating of the diode, maximum power rating of the diode. Okay, maximum power rating of the diode. Now see, PD, maximum power. Power is always equal to V into I. Power is always equal to V into I. Power, I'll write down it here. मैं यहाँ लिखता हूँ. Power is equal to voltage into current. So P, it is equal to V into I. Now see, PD max will be equal to PD max will be equal to maximum voltage. V ये है ना असल में डायोड की पावर. मैंने कहा it is PD means maximum dissipation of power inside the diode. So maximum power that the diode can handle. So maximum power will be equal to maximum diode voltage into maximum current. Now see, what is maximum Zener voltage that it can maintain? VZ. No? It is VZ. So P max divided by VZ will be equal to IZ max. So I will write down here. It is power rating. IS minus IZ max hoga power rating divided by VZ. Okay. So IL minimum will be now equal to IS. IS is how much? 60. है ना? IS is 60. वो ऊपर है 60 milliamperes. 60 milliamperes minus what is the power rating? It is 300
into 10 raised to power minus 3 milliwatts. 300 into 10 raised to power minus 3. तो यहाँ मिली एम्पियर्स का मतलब 10 raised to power minus 3 है. Okay. Divide by VZ. What is VZ? Yes, what is VZ? 6 6. Okay. 6 ठीक है. हाँ 6 तो सब अच्छा बोलते हैं. Because it is a very famous number in a game. Okay. चलिए बताइए what is IL minimum? Please calculate IL minimum. So it will be 10 milliampere. 10 milliamperes. Very good. It will be 10 milliamperes. So range of load current is the load current will vary between 10 milliampere to 55 milliampere in your supply. 10 milliampere to 55 milliampere. So load current की जो range होगी, IL की जो range होगी, it will be between 10 milliampere and 55 milliampere. That will be the range. That will be the range. Okay. That will be the range of this. Is it fine? किसी को कोई सवाल तो नहीं है इसमें? So find the range of IL. अच्छा ठीक है, तो हमें रेंज ही निकालनी थी. किसी को कोई सवाल तो नहीं है बेटा? अच्छा चलिए एक और सवाल बहुत जल्दी जल्दी करेंगे और then I'll stop. I'll write down here. I have a circuit like this. प्लस माइनस ये है. 12 वोल्ट VS है और R है यहाँ पे. I of S is source voltage. Then you have Zener diode somewhere here. Then you have a variable load also here. R of L. And you know that this is load current. This is load current. This is source current यहाँ पे. What is this? Zener minimum IZ. 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 बिल्कुल बिल्कुल ये IZ है और यहाँ ऐसे है और वहाँ R है. ठीक है. अच्छा IZ. All right. IZ. Just a second. It is 500. Minimum. अच्छा चलिए, it is given that IS, it is given that IS is 500 milliamperes. 500 milliamperes. ठीक है. And it is also given that VZ, Zener voltage, is 5 volts. Zener voltage is 5 volts. And you are asked calculate the value of R. Calculate the value of R. Calculate the value of R. कैसे निकालेंगे इसको? रिजवान कुछ आइडिया है? Yes. IS is equal to ये. हाँ. VS IS is equal to VS minus VZ divided by R. चलिए निकालिए जल्दी बताइए. What is the value of R? So 14 ohms. 14 ohms? Yes, it is 14 ohms. 14 ohms is the correct answer. I'll stop here. We'll continue in our next class.